Yeah. Good morning, friends. Today we have topic how we can have early retirement, or if we have taken, we have decided we have to go for the early retirement. Then what should we have the financial goal? Because when we are earning, when you are into job service, then you are getting the lots of money like 50,000, 60,000, 1 lakh, 2 lakhs, whatever the money you are earning from your employer. So after retirement, there is no such as the money. If you was in the old pension scheme, then definitely will get the pension scheme. If you are into the government job, apart from, as you are into the PSU, as you are into private job, then there is no such as pension like government job. Even in the government job, after 2005-6, there is no old scheme pension. There is a NPS, new pension scheme, where you are not getting the lots of money as that is the charm of the government job. After retirement, they will get the lot on the monthly money they are getting. That is not a charm. So today we have to understand when we have taken decision to do early retirement, or we are going to have the retirement on time like 58 या 60, or in case of the doctor they have made the 65 or 68, just I am not aware, but doctor has the more time. Even the teachers had the more time for the retiring, like they have the time 65 or 60 years. Okay, but after that definitely you have to retire. So what you should have financial goal, and you have taken decision ki no, I have not to work till 65, till 68, I want to retire at age of the 45, I want to retire it as at the age of 50. Then what kind of the financial goal you must have? So that today we are going to discuss. So today we have the topic one thing, early retirement. If we have taken to have the early retirement, so what kind of the element, what you have to focus about your early retirement plan. Then earning after retirement, whether you have taken decision early retirement or you retire on time. So what is your earning? Because once you have taken decided to retire, then your earning is not coming as you are into job. So it means you have to manage your finances, because after retirement you are not getting any money. So that is the most important thing, what you have to do. And last one, financial planning. What kind of the financial planning you have to do? So that today we are going to discuss. So first of all, first topic is the defined retirement age. Whatever job you are doing, whether you are into whether you are into government job, whether you are into private job, whether you are into PSU or anywhere, whatever the job profile you are doing, whether it can be purchase, it can be HR, it can be legal, it can be accounts, it can be sales, any kind of job, it can be IT. But you have to take decision when you want to become retired, whether it is the 45, 50 or on time like 58, 60 or 62, whatever the time they have to prescribe by your employer. So today it is the two things, whether we have to think for the early retirement or on time retirement. Suppose that my employer, just say I am doctor or in the government job, doctor retirement age is 65 or 68, just I am not aware. Suppose that I have taken the same no, till 65 I have not to work for the government. At age of the 50 I will take retirement and I will start my own working. Okay, might be possible we have taken decision ki no yaar, theek hai, I am into the government job, I am with the central government, and 65 age is the retirement age. So till 65 I will work, and after that I will take retirement. Then I will think whether I have to open my clinic or not. That's another part, but I will complete my job tenure. So that we have to understand what kind of the thing you are looking, whether you are looking for the early retirement, that is the before time, and you are thinking no yaar, whatever the time will come, whether it is the 58, 60, 62, 65, 68, whatever the time, I will retire, I will take the retirement on time. So both have the
pro and cons. That today we are going to discuss, and after that we will discuss about the financial plan ki whatever the scenario, whether it is the early retirement or whether it is on time retirement, how you have to do your financial plan. So when you are thinking about the early retirement, then you have to think, suppose that you have taken decision ki at age of 50 I will retire, and you was a doctor, and in the government job you have to work till 65. Okay, then whatever the period you have left, but the 15 year of the job you have left. So whether you have the, do you have any ambition like you want to create some hospital, you want to open some clinic, or you want to go outside India ki yeah, India mein to I have delivered lots of the services. Now I want to go USA, USA, UK, New Zealand, Australia, where I will complete my rest of life, and I will join somewhere, and that is my whole and soul purpose of my life. So you have to define what is your ambition. If your ambition to stay in home after taking the early retirement, then I will suggest don't take early retirement. So that is the one of the basic thing that you have to understand when you are thinking for the early retirement or on time retirement, whether you have the any ambition or not. Suppose that I have the retirement age 65 and I have something ambition as I'm the doctor, I want to create hospital, but there is the some fear, यार hospital start करता हूँ तो whether I will fail. I have invested 50 lakh rupees, 1 CR in creation of hospital or formation of hospital or मेकिंग ऑफ हॉस्पिटल, तो कहीं वो 1 करोड़ रुपया मेरा फंस ना जाए, तो फिर मैं रिटायरमेंट में क्या करूंगा. तो इफ यू हैव द एम्बिशन बट विथ यू हैव द फियर, तो आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर दैट. व्हेन यू हैव द एम्बिशन, तो फियर शुड नॉट कम. Fear, if fear is coming, then I will suggest go with the job, don't take the early retirement. So that you have to think whether do you have the ambition or not. Second thing, might be possible your kids is well settled and kids is saying ki papa, I settle in the USA and I need your help because me and my wife is the working and I need someone who can take care of my kids. And as you know your kids is the earning so much, and even you will take the retirement at the age of the 50, so at least you will get the 30,000-40,000 rupees as a old scheme pension, or even there is no old scheme pension, so you have the lots of the property like during the job or during the employment you have created 5 to 6 property where you are getting 20,000 per property as a rental income. So 1.25 lakh ka you are getting the income, so that is the enough for you. Okay, so if there is a such kind of the scenario, then you can think कि ठीक है यार काम नहीं करना, I don't have the mission, but if I have created, I have settled my family, मैं अपने बच्चे को तो यूएसए कर दिया, और if I give the some time to my son to son, then might be possible my son will progress and as well as the my third generation will also progress. So that you have to understand कि आपका ambition क्या है, what is the family responsibility to take the early retirement. तो पर्सनल नीड, तो आपका पर्सनल नीड क्या है, व्हाट यू हैव द हॉबी. सपोज दैट यू हैव द हॉबी कि नो यार मैंने आई हैव डन माय 25 years of the job or 20 years of the job. Suppose that I have started my job at the age of the 25 and after 20 years I think यार बहुत हो गया यार, जस्ट फेड अप हो गया, चलो आई हैव द हॉबी की आई हैव टू स्टार्ट वन वेंचर. आज के डेट पर देयर इज अ स्टार्टअप कॉन्सेप्ट, तो आई हैव hobby to start the startup in the medical line or IT field or anywhere. If I have hobby, I have the some personal need, then I can think about the early retirement or I can think about the on time retirement. So this is the one thing where you have to take decision, you have to think कि what you have to do, कि आपको early retirement जाना है या on time retirement जाना है. And last one, the personal need. Personal need is that you know if when you are doing the job at
age of the 45, 50, 55, so definitely your income is the handsome money. If you are the professional or you are into the class 1 officer or you are in the big position, okay, so your income is approximately 1 lakh, 1,50,000, 2 lakh rupees per month. But when you have taken the early retirement or you have started your own business, your consultancy, your any ambition, so I am very much sure that kind of money you will not start earning from the very first month. That you have to understand whether do you have the personal need. Suppose that you have started one business or you have not completed and you are not getting such kind of the success, but your family needs the 1 lakh rupees per month, like EMI पे करना है, बच्चे का education देना है, तो in that scenario I will never advise to go for the early retirement. You have to go for the on time retirement. So there are 3 to 4 things where you have to think whether you have to take early retirement or on time retirement. That is your personal choice. In spite of that, that you have to think. अब हम अर्ली रिटायरमेंट करते हैं, तो सपोज दैट आई हैव टेकन डिसीजन कि चलो भाई at the age of 45 I have taken decision कि after completion of 20 years of the service I want to take early retirement. So first of all I have to see what is my present earning income. Like till I am in the job, so my present earning income was the 1,50,000. But I know okay, when I have resigned, so my income will be zero. Again, I was into the private job and there is no such as the pension scheme, so my earning becomes the zero. Then I have to identify in jahan par I was getting 1,50,000 per month. In the next month, after giving my retirement, after giving my resignation letter, or after taking VRS, I'm getting zero. I'm getting zero. Then how I will complete? I will fill this gap. 1,50,000 से zero का जो gap है, how I will fill? So we have to see कि पहले कितना income था और after taking the VRS or after giving the putting my job, whether I have the some rental income, whether I have the some investment income, or whether I have the some other kind of the income. तो वो आपको compare करना है कि whether present income after retirement is completing or fulfilling your need or not. Suppose that your kids has taken the good study and they are the working very well. Okay, they have given the promise to you, Papa, just take the early retirement. Aap aaram karo, whatever the money if you need, like 20,000 per month, 25,000 per month, you are earning 20,000 rupees per month from one rental house, and I will pay 20,000 per month as a your for fun. But आज से आपको काम नहीं करना है. Then you have to understand कि आपका रोजमर्रा का जो खाने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, वो कैसे क्या होना है. That you have to understand for taking early retirement. अब क्या है कि when you are taking early retirement or on time retirement, first of all you have to make the budget कि after retirement how much expenditure you have to do. Like क्या आपके बच्चे की पढ़ाई हो गई है, if your study of your kids has completed, then एक बहुत बड़ा खर्चा खत्म हो जाता है. क्या बच्चे की शादी हो गई है, तभी एक बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, बच जाता है. When your kids is the settle down, they are earning very good. It means कि आज के डेट पर you have to manage only you and your spouse. Okay, suppose that you have the one house property where you are residing. तो आपको EMI अगर your loan is the completed और that is the inherited property, तो आपको लोन भी, आपको EMI का भी चक्कर नहीं है. There is no need of paying the rent. तो आपको रेंट भी नहीं देना है, EMI भी नहीं देना है, बच्चे पढ़ गए हैं, तो खर्चा क्या है? Only expenditure related to you and your spouse. You and spouse पर लिविंग कॉस्टिंग क्या है? 1,000-2,000 का इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, 4-5 हजार का खाने का खर्चा आ जाएगा. इफ यू आर मूविंग समवेयर, 2-4-5 हजार थोड़ा सा नेट का खर्चा, मतलब 20-25,000 में यू कैन सर्वाइव. तो व्हेन यू हैव द इनकम लाइक 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 50,000, वट एवर द मनी, तो 20,000 रुपीज पर मंथ अर्निंग इज नॉट ए बिग अमाउंट. बिकॉज आप कहीं भी हो तो कुछ ना कुछ आपने सेविंग कर रखा होगा, कुछ ना कुछ आपने कोई घर बना रखा होगा. might be possible you are getting the some interest rental income or you have the some FD जहाँ, तो 15-20 हजार रुपया when your current income is the 1,50,000 या 2 लाख है, then there is no worry to have the 20,000, 25,000 per month का income. And one more thing,
कि व्हेन सपोज ऐसा तो है नहीं कि टुडे योर किड्स इज सेटल डाउन और आपने कल के कल वीआरएस ले लिया, तो इट इज 110% श्योर कि वंस योर किड्स इज द सेटल डाउन आफ्टर 3 to 4 or 5 years you take the retirement or you think about the VRS। तो वो जो 4-5 साल का है, तो एज यू नो कि देयर इज नो सच एज द पेंशन स्कीम, तो व्हाट यू हैव टू डू कि जो नेक्स्ट 4 ईयर का जो इनकम है आपको बेटे से लेना नहीं है, तो बेटे को देना भी नहीं है। आपने सारे बच्चे का शादी कर दिया, घर का होम ईएमआई नहीं देना है, तो सपोज दैट यू आर गेटिंग द 1,50,000 पर मंथ, तो जो आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर है लाइक 25,000, 30,000, 35 वो खर्च करके वो अगला 1 लाख रुपए यू आर गेटिंग टू सेव। तो एक साल में तकरीबन यू आर गेटिंग टू सेव 12 लाख रुपीज, और अगर 4-5 साल भी आपने जॉब कंटिन्यू कर लिया देन यू हैव सेव अप्रॉक्स 50 लाख रुपीज। वो 50 को भी आप एफडी भी कुछ करते हो तो आराम से महीने का 20-25 हजार रुपया कहीं ना कहीं से, वो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 3 to 4 years, उससे पहले का भी कुछ ना कुछ सेविंग होगा। तो यू हैव टू क्रिएट द बजट कि आफ्टर रिटायरमेंट कहाँ कहाँ आपका खर्च है। इफ यू हैव एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बिग अमाउंट लाइक बच्चे की शादी करना है या फिर बच्चे को पढ़ाना है या योर किड्स इज नॉट सेटल डाउन वेरी वेल, देन उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना है, देन यू हैव टू थिंक अनदर वे कि क्या मैं आफ्टर रिटायरमेंट आई हैव टू डू वर्क और आफ्टर रिटायरमेंट हाउ माय मनी विल ग्रो। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग जहां पर आपको ये करना है। एंड परजेंट एक्सपेंडिचर दैट वी हैव द डिस्कस कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेक योर बजट, तो आपको परजेंट एक्सपेंडिचर भी सोचना है कि जॉब में आपका क्या एक्सपेंडिचर था और जब आप रिटायरमेंट के बाद आपका क्या एक्सपेंडिचर होगा। सपोज दैट यू आर डूइंग द जॉब इन दिल्ली मेट्रो सिटी, बट यू नो कि आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन गो विलेज और यू कैन गो द स्मॉलर टाउन। तो जो दिल्ली एनसीआर का खर्च है स्मॉलर टाउन में तो ऑलमोस्ट 30-40% ऐसे ही रिड्यूस हो जाता है। तो दैट यू हैव टू थिंक कि प्रेजेंट इनकम क्या है और प्रेजेंट एक्सपेंडिचर क्या है, एंड अलोंग विद दैट यू हैव टू क्रिएट द बजट सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि आपकी रियल नीड क्या है और उस नीड को हाउ यू विल कंप्लीट, हाउ विल जस्टिफाई योरसेल्फ कि व्हाटएवर द यू हैव द इनकम इस पर आप जस्टिफाई कर सकते हो। देन यू कैन थिंक अबाउट द फाइनेंशियल प्लान। सपोज दैट you have created कि आफ्टर रिटायरमेंट मेरे को सिर्फ 20,000 की रिक्वायरमेंट है और यू हैव सीन कि यार मेरे पास तो 1 करोड़ का सरप्लस है, देन आपको इफ यू हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ द रिस्क, आप बैंक में एफडी कर दो। बैंक एफडी विल प्रोवाइड द 6% रिटर्न, मिनिमम 6% रिटर्न, मे बी सीनियर सिटीजन में 7% भी आ जाता, 6% भी आता है। 6 लाख रुपए थोड़ा सा आपने डिडक्शन ये सब लेके या फिर नेक्स्ट ईयर से 7 लाख तक देयर इज नो टैक्सेशन, तो 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स लगा नहीं, ठीक है। इफ बैंक हैज डिडक्टेड सम टीडीएस एट द रेट ऑफ द 10%, वो आपको बाद में रिफंड आ जाएगा। लेट्स एज्यूम इन हैंड मेरे को अभी 5,50,000 आया, डिवाइडेड बाय 12 कर देता तो तकरीबन 45,000 आ गया। तो दैट यू कैन थिंक कि इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हो, बट यू आर थिंकिंग कि माय इनकम इज 20-35,000 per month, but my outflow is the 50,000, 60,000, 80,000 per month, क्योंकि मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए देना है, मेरे को उसको ईएमआई के लिए देना है। इन दैट सिनेरियो यू हैव टू थिंक द अनदर वे, मैं अर्ली रिटायरमेंट नहीं लूँ, मैं कोई एक्सटेंशन ले लूँ, या आफ्टर रिटायरमेंट आई कैन स्टार्ट समवेयर वर्किंग या एज ए कंसल्टेंट, whatever you think, yeah I can start any business, I can start any startup, मतलब you have to think कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, so your expenditure will match your income will match your expenditure. Capital need, suppose that you have created your home before retirement, then वो capital need बहुत बड़ी खत्म हो गई। If you have not purchased your home, then it is the biggest problem, or you have purchased the home before retirement just 2 years back, then you have to pay the lots of the EMI for the at least 10 year, 12 year, 15 year, 18 year. So that you have to understand कि आपकी capital needs क्या है, ठीक है। After retirement, I am very much sure कि there is no such as the need of the car like Innova, Audi, Mercedes की requirement नहीं है। If you need the car, then it can be that need can be solved within the 4 lakhs, 5 lakhs, 6 लाख के कार से भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। There is no need to have the 20 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का कार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ओके। तो कैपिटल नीड इज द बिगेस्ट थिंग लाइक होम। होम से बड़ा कैपिटल नीड रिटायरमेंट के टाइम पर कुछ नहीं होता। वंस यू हैव द होम बिफोर रिटायरमेंट, बल्ले बल्ले है, there is no such as the issue, but you don't have the home or you are paying even at the time of the retirement, then it is the biggest question for you कि how you have to survive, because after retirement आपकी income
ऑलमोस्ट आधी होनी है या कम होनी है, इवन यू हैव स्टार्टेड एनी इनकम, एनी कंसल्टेंसी, तो इनकम उस लेवल से नहीं होगा व्हाट एवर द इनकम यू आर गेटिंग एज इनटू जॉब। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कैपिटल नीड्स कितनी है। Then when you have planned or you have taken the retirement on time, like 58 years, 60 years, 62, 65, whatever the time, then first of all you have to think what is your capital needs, like घर बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, जो भी आपकी कैपिटल नीड्स है, कोई महंगी गाड़ी खरीदनी है, कोई नया लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, whatever you have to list down your capital needs। अगर आपका हो गया कि no I have one house जहां पर आई एम रिजाइनिंग, देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट माय मनी इनटू कैपिटल नीड्स, तो वो आपका एक बहुत बड़ा खर्चा निकल गया अपने आप। देन किड्स नीड, क्या आपको बच्चे को पढ़ाना है, क्या बच्चे को मैरिज करना है, इस तरीके से क्या किड्स के बिजनेस के लिए यू हैव टू पे द सम मनी। सपोज दैट योर किड्स बिकम द इंजीनियर, एमबीबीएस और एमबीए और एनी फैशन डिजाइनर और एनी अदर काइंड ऑफ द प्रोफेशनल डिग्री, और without degree he is earning some money, good money into the startup or any business, then आपको बच्चे के बारे में सोचना ही नहीं है। then आपका whatever you have the money like 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ whatever the money you have, आप उसको सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना है। that you have to understand कि capital needs क्या है, kids का need क्या है, then life का needs क्या है, that I have discussed कि you have to create your budget, like after retirement क्या आपको डेली इधर से उधर कन्वेंस कम्यूट करने की जरूरत है, नो। तो क्या आपको गाड़ी रखने की जरूरत है, माइट बी पॉसिबल आई कैन से कि इफ यू आर इनटू द मेट्रो सिटी देन आई विल सजेस्ट कि डोंट कीप द कार, बिकॉज कार का स्टैंडिंग कॉस्ट भी अप्रॉक्स 10 to 12,000 रुपीज पर मंथ है। इफ यू हैव टेकन यू आर यूजिंग द कैब लाइक ओला एंड उबर, तो आपका 5-6 हजार में भी आप पर डे भी कहीं जाना हो, देन अगेन मंथली 4 से 5 हजार में एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो जाता है। देन व्हाट इज द नीड टू हैव द कार, जो मुझे तो 12 to 13,000 15,000 पर मंथ पड़ रहा, विद पार्किंग, विद पेट्रोल, विद स्टैंडिंग वैल्यू, इंश्योरेंस, एएमसी, ये सब लगा के। तो वहां पर हमें देखना है। उसके बाद हमें देखना है कि हमें खाने पर कितना खर्च करना है, हमें कपड़े लत्ते पर कितना खर्च करना है, क्या व्हेन वी आर विजिटिंग एनी मैरिज और एनी फंक्शन तो हमें कितना पैसा खर्च करना। तो यू हैव टू क्रिएट योर लाइफ नीड। एंड लास्ट वन यू हैव टू मिसलेनियस, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं लाइक मेडिकल, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आप कभी सोचते नहीं हो, इन स्पाइट ऑफ दैट दे अराइजेस इन योर इन फ्रंट ऑफ यू, उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपको महीने का 3-4-5 हजार रुपया का यू हैव टू क्रिएट द सम मिसलेनियस। सपोज दैट यू हैव टेकन वीआरएस एंड योर फैमिली मेंबर इज अवेयर, अरे मनीष जी को तो 1 करोड़ रुपया मिला है, might be possible next 2 and 3 days someone has from your family or your friend or some close family has come there, यार देखो ना यार, मैं अपने बच्चे को ना just I want to send my kids abroad और there is the shortage of the 10 lakh rupees या 5 lakh rupees, can you provide for the 6 month 1 year? अब आपने प्रोवाइड कर दिया या नहीं किया, देन इस तरीके के मिसलेनियस नीड इट माइट बी पॉसिबल आपके लिए हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है, दैट यू आर नॉट अवेयर कि ये मिसलेनियस नीड कब होगा, किसके लिए होगा। तो इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ कंटिजेंट बना के रखना पड़ेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख या महीने का 5,000 की कुछ भी अनएक्सपेक्टेड खर्च हो सकता है। लेट्स से जो किसी फैमिली वाले ने बोल दिया कि मनीष यार यू हैव टेकन द वीआरएस एंड आई एम प्लानिंग टू कम फ्रॉम द यूएसए फॉर द 1 month, अब यूएसए से इंडिया आ रहा है और he or she will stay in your home, तो वो एडिशनल खर्च है that you have not anticipated in your budget, you have not anticipated in your life need, okay। तो इस तरीके से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है। और might be possible your very close friend is residing in the Dubai, they have told कि अरे यार तुमने बहुत जॉब कर लिया और मैंने जिंदगी भर बोलते रह गए you have to visit the Dubai, now you have taken the VRS, एक बार आ जाओ। बट यू हैव नॉट एंटिसिपेटेड कि कम से कम चलो रहने का खर्चा वहां का होगा, खाने का खर्चा उसका होगा, इन स्पाइट ऑफ दैट एयर फेयर तो आपको देना है, आने जाने XYZ में भी 50,000 या लाख रुपए का खर्च होना है। देन दैट वाज नॉट इनटू द कैपिटल नीड, दैट वाज नॉट इनटू द किड्स नीड, दैट वाज नॉट इन द लाइफ नीड, दैट वाज इनटू द मिसलेनियस नीड, क्योंकि कब किसकी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है नोबडी नो। तो इस तरीके से यू हैव टू मैनेज कि कब कौन सा खर्च मुझे क्या करना है। सो अगर ये 3-4 चीज आपके हाथ में आ जाता है, यू आर अवेयर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर कैपिटल नीड्स, व्हाट इज योर किड्स नीड, लाइफ नीड्स एंड मिसलेनियस नीड, देन यू कैन थिंक फॉर द फाइनेंशियल प्लान कि चलो मेरे पास 50 लाख है या 1 करोड़ है या 5 करोड़ है या सिर्फ 10 लाख है,
आई हैव 1 हाउस, 2 हाउस, 3 हाउस। तो अब मुझे आगे कितनी पैसे की रिक्वायरमेंट है एंड हाउ आई विल गो। And money investment you can go, like suppose that at the time of the retirement you got around 1 CR, okay, yeah, during the job you have save out, कुछ पैसा आपने सेव कर लिया, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, then you have the option, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाएं, गोल्ड में, डायमंड में, सिल्वर में, कमोडिटी में पैसा लगाएं, इक्विटी शेयर में लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं, इंश्योरेंस में लगाएं, या यू हैव टू स्टार्ट बिजनेस, या इन योर फ्रेंड और रिलेटिव हैज स्टार्टेड इन ए बिजनेस, तो यू कैन फंड। तो ये सब सारा चीज क्या करना है, कैसे करना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि बिजनेस में यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो बिजनेस एक दिन में रिटर्न नहीं देता है, इट विल टेक सम टाइम, हो सकता है 2 years, 3 years, 4 years, 5 years के बाद दे विल स्टार्टेड टू रिटर्न बैक टू यू। तो इक्विटी शेयर में हो सकता है यू हैव परचेज 1 शेयर और नेक्स्ट मंथ में धड़ाम 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 नीचे गिर गया, बट माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट मंथ में वो 5%, 10% भी ग्रो कर सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि where you have to put the money, okay, and in what percentage। suppose that you have the after retirement you have the 2 CR, तो क्या 2 CR का घर खरीद लूं मैं, 50 लाख का 4 घर खरीद लेता हूं, और एज्यूम करता हूं कि अगर चारों घर में रेंट पर लगा दूंगा तो एवरी हाउस बिल गिव 15,000 या 20,000 का रेंटल देगा, तो 70-80 हजार का रेंटल वैल्यू आएगा। लेट्स एज्यूम अगर वो कोई कारण से 2 महीना 3 महीना चारों घर खाली रह जाता तो व्हाट विल हैपन। तो एक पूरा पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, दैट वी विल अंडरस्टैंड, ओके। एंड नेक्स्ट सेशन में वी विल थिंक व्हाट इज योर मंथली इनकम, व्हाट इज योर ईयरली इनकम, और जो मैंने अभी बोला है कि हाउ मच परसेंटेज यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर accumulated fund has to invest into गोल्ड, बिजनेस और एक्सेट्रा, वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, जहां पर हम मंथली एक्सपेंडिचर पर भी बात करेंगे, ईयरली इनकम पर भी बात करेंगे, वो सारे चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज द एवरीथिंग। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।